Namaste bachon. Today we are going to see a story. Okay? Yes, it is a fable, that is Kalpit Kahani. Okay? The name of the story is Dant Katha. Part 8. Lesson 8. Dant Katha. Dant mane dant. Okay ma? Dant. Dant mane tooth. Katha mane kahani. Story. Okay, so we are going to see the lesson Dant Katha. So children, in this lesson there are two characters. One is Dadima, that is grandmother. Okay, and the other person is Bhavana, her granddaughter. Okay, so grandma and granddaughter are there in this story. Okay, now let us move on to the story. So children, please take your reader, keep your finger so that when I read, you can follow me and you can underline the hard words, meanings. Okay? Yes. Now, Dadi, Dadi, देखो मेरा दांत, Bhavana boli. Okay, so the granddaughter, her name is Bhavana. Okay, ma. So Bhavana is calling her grandmother. Okay, Dadi. Dadi mane grandma. Dadi, Dadi, देखो. देखो means see. Mera, dant, my tooth. Okay, Bhavana is telling to her grandmother. भावना की हथेली पर रखा छोटा सा दांत देखकर बोली, इतने दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया. Okay, children, here the Dadi is telling this sentence. Dadi, भावना की हथेली पर, हथेली माने palm. Okay, ma, palm. हथेली पर रखा छोटा सा माने ए स्मॉल, दांत, दांत माने टूथ, देखकर बोली. सो द ग्रैंडमदर इज लुकिंग एट द स्मॉल टूथ. ओके मा, एंड शी इज टेलिंग दैट इतने दिनों माने फॉर द लॉन्ग डेज. ओके, सो इट वॉज हर्टिंग यू फॉर सो मेनी डेज. After all, it broke. Okay, at the end. Okay, at last it broke. Okay, this grandmother is telling to Bhavana. Okay, इतने दिनों माने for these long days. तकलीफ माने hurting. Okay, दे रहा था, it was hurting you. आखिर, आखिर माने at the end. Okay, आखिर, टूट माने broke. Okay, so at last it broke and it came out. You got relieved from the pain. The grandmother is telling to Bhavana. Next paragraph children. Bhavana ने पूछा, दादी अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? Now Bhavana is asking to her grandmother. ओके, सो पूछा माने आस्क्ड. भावना ने पूछा, भावना आस्क्ड. दादी अब माने नव, मई माने आई. इस टूटे दांत. ओके, टूटे माने ब्रोक. ओके मा, टूटे दांत माने ब्रोकन टूथ. ओके, सो द भावना आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, ग्रैंडमा, what should I do with this broken tooth now? Okay, now दादी ने समझाया. now grandmother is explaining. okay, दादी माँ ने समझाया, इसे अपने तकिए के नीचे रख दो. तकिए माने पिल्लो. okay ma, so the grandmother explained, put it under your pillow. okay, रात को अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी. चिल्ड्रन, परी माने एंजल और फैरी. ओके, अनोखी परी माने यूनिक फैरी. ओके, अनोखी परी आएगी, विल कम, और इसे ले जाएगी. So what that grandmother said, at night the unique fairy will come
and it will take it away. Okay, Bhavana टुमक्कर बोली. ओके, टुमक्कर माने chuckled. ओके मा, टुमक्कर बोली. भावना chuckled and said, दादी कोई परी नहीं आएगी. ओके, नो एंजल विल कम. ओके, कोई परी नहीं आएगी. नो एंजल विल कम. आप मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी. ओके, you will pick up my teeth and throw away. Okay, the Bhavana is telling to her grandmother. Ananya भी यही कही रही थी. Okay, Ananya is the name of the Bhavana's friend. Okay, so she was telling, Ananya was saying the same thing. Ananya Bhavana की सहेली थी. Children, सहेली माने friend. Okay ma, she's a girl. Okay, so to refer a friend who is a girl, we have to use the word saheli. Okay, here Ananya is the girl. Okay ma, who is the friend of Bhavana. So Ananya was the friend of Bhavana. दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी. ओके, साथ साथ माने टुगेदर. ओके मा, से दे बोथ आर स्टडीइंग टुगेदर सिंस फ्रॉम स्टैंडर्ड 1, that is the grade 1. Okay, so I'll explain you again children. They both. ओके, दोनों माने बोथ. पहली कक्षा से, पहली कक्षा माने स्टैंडर्ड 1, that is grade 1. पहली कक्षा से साथ साथ, साथ साथ मीन टुगेदर, पढ़ रही थी माने दे वेर स्टडीइंग टुगेदर. ओके, दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी. ओके, यस, दे वेर स्टडीइंग टुगेदर. अनन्या के ऊपर के 2 दांत टूट चुके थे. 2 दांत माने 2 teeth. Okay ma, Ananya's 2 teeth. Toot माने broken. Okay, so the meaning is children, Ananya's 2 teeth were broken in the upper jaw. Okay ma, yes. रात हुई माने the night came. Okay, भावना सोच रही थी. भावना was thinking. ओके, सोचना माने think. भावना was thinking. इस दांत का क्या करूं. दांत माने tooth I said. क्या माने what. ओके, so what भावना is thinking, what should I do with this tooth. ओके, yes. परियों तो होती नहीं जा ले जाएंगी. परियों तो होती नहीं जो ले जाएंगी. ओके, परियां माने fairies. ओके चिल्ड्रन, यस. तो भावना इज thinking in her mind, there is no fairies exist in this world. ओके, परियां तो होती नहीं, there are no fairies. ओके, जो ले जाएंगे, which will come to take this tooth. ओके, that भावना will keep under her pillow. अनन्या ऐसा ही कह रही थी. ओके, so Ananya was saying the same thing. Okay, how this grandmother is telling, no, the same thing Ananya was telling to the Bhavana. Okay, yes. वह मुझसे 2 महीने बड़ी है. Okay, here Bhavana is telling Ananya is 2 months elder than me. Okay, yes, she is 2 months elder than me. बड़ी है माने elder. Okay, 2 महीने माने 2 months. She is 2 months elder than me. Okay, ज़्यादा जानती है. Now Bhavana is telling to her grandmother, Grandma, Ananya is 2 months elder than me. She knows
मोर, ज़्यादा जानती है माने शी नोस मोर. ओके, लेकिन दादी कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी. लेकिन माने बट. ओके माँ, दादी कह रही थी. द ग्रैंड मदर वॉज सेइंग. ओके, सो व्हाट शी सेइंग? की माने दट. ओके, दांतों वाली अनोखी परी, that is the unique fairy. Okay man, that unique fairy will come, okay, to take this tooth, okay, which you are going to keep under the pillow. क्या नाम होगा? Okay, now Bhavana is asking to her grandmother. Okay, क्या नाम होगा उस परी का? दंत परी या अनोखी दंत परी? Now Bhavana is asking to her grandmother, what will be the name of that fairy? Okay, क्या नाम होगा उस परी का? Okay, for that परी what will be the name? वह इन दांतों को क्या करेगी? What she will do with these teeth? Okay, now Bhavana was having a doubt. So is asking to her grandmother. वह माने that परी. Okay ma, that fairy. इन दांतों का क्या करोगी? What they will do? Okay. ओ, शायद दादी ठीक कह रही हो. Okay. Now Bhavana is thinking in her mind. Okay ma, maybe. Okay, शायद माने perhaps. Okay, शायद दादी ठीक कह रही हो. Maybe my grandmother is telling the truth. Okay. सोचते सोचते भावना को नींद आने लगी. सोचना माने thinking. Okay ma, सोचते सोचते. Okay, she is lying on her bed and she is thinking about that pari. Okay, सोचते सोचते भावना को नींद माने sleep. Okay ma, so what happened? Thinking about the same thing, भावना started falling asleep. उसने अपना दांत तकिए के नीचे रख दिया और सो गई. Okay, that is what her grandmother said. Okay, what Bhavana did, children? उसने अपना दांत, her tooth, okay, तकिए के नीचे, that is under the pillow, तकिए के नीचे रख दिया, kept. Okay ma, she kept that tooth under the pillow और सो गई. Okay, yes, so she put her teeth under the pillow and fell asleep. 3 परियों बैठी बातें कर रही थी. परियों माने 3 परियां माने 3 fairies. ओके माँ, यस, were sitting and talking. बैठी बातें कर रही थी. बातें करना माने that is talking with one another. ओके, चांदनी बोली, भावना का मानना है कि हम है ही नहीं. नाउ Chandini mane the name of a fairy. Okay, there are 3 fairies sitting together. In that one of the fairy name is Chandini. Chandini boli. Chandini said, Bhavana believes that we are not or there. Okay, we are not there. Okay, hai hi nahi. Kiran Pari boli. The another fairy name is Kiran. Okay ma, Kiran. So Kiran Pari said, okay, Kiran Pari said, हम कुछ करना चाहिए. We should do something. हम कुछ माने some. Okay माँ, हम कुछ करना चाहिए. We should do something. रोशनी बोली. The last Pari name is Roshini. Okay, there are 3 fairies. Okay, the first one is Chandini, second one is Kiran, and third one is Roshni. Okay ma, yes, Roshni boli. Roshni said, हाँ माने yes. Okay, हाँ हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए. ज़रूर माने surely or certainly. Okay, हाँ हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए. Yeah, we must do something.
Okay, yes. Bhavana subah uthi. Subah mane early morning. Okay, ma? Yes. So she woke up early in the morning. Subah uthi. दांत तकिए के नीचे नहीं था. दांत तकिए के नीचे. That is, the tooth was not under the pillow. Okay, the tooth was not under the pillow. हाँ, एक पर्ची पड़ी थी. Okay, ma? Yes, in that place, okay, where she kept her tooth, no, there was a slip. Okay, there was a small note. Okay, so in that note, what something has written. उस पर लिखा था. लिखा माने was written. Okay, there was a some piece of paper. Okay, my a note. Okay, so something was written there in that paper. दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं हम दो देंगी. Okay, ma? I'll repeat again, children. दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं हम दो देंगी. Okay, ma? So this is the note written by the pari. Okay, ma? That pari, and they kept under the pillow. Okay, so what it has written? It was written on it, teeth have been taken. Okay, so actually taken teeth. Okay, but we will give two. Okay, एक नहीं हम दो देंगी. We will give back you two teeth. Okay, yes. भावना प्रतीक्षा करने लगी. प्रतीक्षा माने waiting. Okay, ma? So प्रतीक्षा करने लगी. भावना waited. Okay, when her new teeth would come. Okay, भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत माने न्यू tooth आएगा. भावना started waiting. Okay, and she is thinking that when her new tooth would come. इसी बीच एक और दांत टूट गया. So in the meantime, what happened, children? Another tooth broke. Okay, ma? Meanwhile, another tooth broke. वह जब भी अपनी मुंह शीशे में देखती तो उसे बुरा लगता. ओके, वह माने हियर भावना. जब भी whenever अपना मुंह माने फेस, हर फेस, शीशे माने मिरर में देखती तो उसे बुरा लगता. Okay, she felt very bad whenever she looked into the mirror. Okay, ma? Whenever she saw her face in the mirror, she felt very bad. आगे के दो दांतों की जगह कुछ ना था. ओके, सो आगे माने फ्रंट. ओके, मा? दो दांतों माने टू टीथ की जगह माने प्लेस. कुछ ना था. Nothing was there. Okay, ma? There was nothing in place of the front two teeth. Okay, so she felt very bad whenever she looks into the mirror. She felt very sad. Okay, yes. हाँ, भावना का दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया. What happened, children? Now, हाँ माने यस. ओके, नाउ दिस टाइम व्हाट भावना डिड? दूसरा दांत माने अनदर टूथ. ओके, टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया. नाउ दिस टाइम भावना डिडंट टेल हर दादी माँ. ओके, यस, भावना सेकेंड टूथ वाज ब्रोकन बट शी डिड नॉट टेल हर ग्रैंडमदर. ओके, यस. रात होने पर वह अपने आप से बोली, आज पूरी रात जागकर परियों को देखूंगी. ओके, सो रात होने पर, ओके, व्हेन द नाइट केम. ओके, माँ, वह अपने आप से बोली. शी वॉज टेलिंग टू हरसेल्फ. ओके, आई विल वेक अप द होल नाइट एंड सी द परी.
दैट इज़ fairies. ओके, अपने आप से बोले आज पूरी रात जागकर परियों को देखूंगी. आई विल सी दिस fairies. परंतु तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई. ओके माँ, बट परंतु माने बट, तकिए माने पिल्लो, पर सिर रखते ही. Okay, as soon as she kept her head on the pillow, what happened? She has started sleeping. Okay ma, but she fell asleep as soon as she laid her head on the pillow. जब सुबह उठी तो देखा कि तकिए के नीचे नहीं था. ओके, जब सुबह उठी, सुबह माने मॉर्निंग, देखा कि दांत, दांत माने टूथ, तकिए के नीचे नहीं था. ओके, एक्चुअली व्हाट हैपेंड when she woke up in the morning, she saw that the tooth was not under the pillow. हाँ, ये कागज रखा था. अगेन देर वॉज ए स्लिप. ओके माँ, कागज माने पेपर. ओके, ये कागज रखा था, रंग बिरंगा कागज, दैट वॉज ए कलरफुल पेपर. उस पर लिखा था, समथिंग वॉज रिटन इन इट. ओके, सो व्हाट वॉज रिटन इन दैट पेपर? उस पर लिखा था, दैट इज इन दैट स्लिप. ओके माँ, रंग बिरंगा कागज माने कलर्ड पेपर. ओके, कलरफुल पेपर. इन दैट इट वॉज रिटन ऑन इट, हम परियां हैं, वी आर फैरीज. हम परियां हैं, वी आर फैरीज. दूर देश की, दूर देश माने फ्रॉम फार अवे कंट्रीज. ओके मैम, दूर देश की, अलग अलग, अलग अलग माने डिफरेंट. ओके, और कई वेश की दांत लिया है. दांत लिया है, दांत ही देंगी, एक नहीं दो दो देंगी. ओके, so this is was written in the last time also. No children? Yes, yes. दांत लिया है, दांत ही देंगी, एक नहीं दो दो देंगी. Okay ma, now see here children, now I'll explain you. We are fairies of different countries, have taken different color teeth. We will give tooth for the tooth, but not one, we will give two. Okay, दांत लिया है, that is we have taken the tooth, दांत ही देंगी, we will give back the tooth. एक नहीं, not only one, दो दो देंगी. Okay, we will give back two teeth. भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली. चिल्ड्रन, दांतों तले उंगली दबाना माने that is shocked or surprised. Okay ma, it is actually a sayings. Okay, yes. भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली. Okay, she was shocked to see that slip. Why? Because last time, okay, she went and she explained everything to her grandmother. Then the grandmother said to keep the tooth under the pillow. Okay, that time the grandmother said a fairy will come, they will take your tooth and they will give back your tooth. But Bhavana didn't believe. Now this time, okay, when her second tooth was fallen down, she didn't tell to her grandmother. Okay, so very quietly, secretly, she kept the tooth under the pillow. Okay, now the pari came and they kept the colorful letter under her pillow. Now Bhavana believed that there are fairies in the world. वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई. ओके माँ, भावना इज रनिंग and she is going to meet her grandmother. Okay, दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली and said, दादी, परियां वास्तव में होती हैं. Okay, what Bhavana is telling? Grandma, grandma, fairies are there in this world. I believe your words. Okay, परियां वास्तव में होती हैं. ओके, यस. ओ, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है. ओके, नाउ
Bhavana is telling मेरे मुंह माने here mouth. Okay children? Yes, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है. दर्द माने pain. ओ मेरे मुंह में दर्द हो रहा है. ओके ओ माई माउथ इज हर्टिंग. लगता है नया दांत आ गया है. लुक्स लाइक ए न्यू टूथ हैज़ कम इन. ओके सो इट सीम्स नया दांत माने न्यू टूथ आ गया है. ओके न्यू टूथ हैज़ कम. दादी उसका खुला मुंह देखकर बोली, भावना तुम्हारे एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं. दादी माँ सा हैर ओपन माउथ. खुला मुंह माने ओपन माउथ. ओके खुला मुंह देखकर बोली. ओके द ग्रैंड मदर सा हर ओपन माउथ एंड सेड, भावना तुम्हारे एक नहीं दो दांत निकल रहे हैं. ओके grandmother said, seeing her open mouth, Bhavana, you have not one but two teeth is coming out. Go and look into the mirror. She is telling to the Bhavana. Okay ma? Yes. एक टूटी हुई जगह पर और एक पीछे. Okay, so the one is coming in the place where it has broken, other is coming at the back. Okay, so I'll explain you children. टूटी हुई जगह माने in the broken place. Okay, yes, पीछे माने behind. So one at the broken place and the other one is behind. Okay, एक पीछे. Now एक ही जगह दो तो आ ही गए. So in the same place. Okay, एक ही जगह माने in the one place. Okay, two have come instead of one. एक ही जगह दो तो आ ही गए. 4 दिन में दो और आ जाएंगे. ओके 4 दिन माने in 4 or 6 days. ओके 2 more will come in 4 or 6 days. आप तो खुश हो. She is asking, the grandmother is asking, आप तो खुश हो. Now are you happy? Okay, now are you happy? उन्होंने फिर पूछा, अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को क्या बताओगी. Okay, now the grandmother is asking. Okay, she asked again, now what will you tell your friends and that अनन्या. Okay, अब अपनी सखियों माने सहेलियों. ओके माँ सखी सहेली. All these words refer to the friends. Okay, who has to be the female. Okay, so if a girl having a girl friend, so they are referred as सहेली और सखी. ओके अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को क्या बताओगी. ओके नाउ व्हाट विल यू टेल योर फ्रेंड्स एंड दैट अनन्या. भावना हंसते हुए बोली, परियों होती हैं. हंसना माने टू लाफ. ओके माँ भावना हंसते हुए बोली. भावना laughed and said, परियां होती हैं. चिल्ड्रन परी माने फैरी. परियां माने फैरीज. ओके माँ प्लूरल. परियां होती हैं. ओके now children Bhavana understood. Okay, so who is that pari? Her grandmother. Okay, she only took that tooth from her pillow and she kept that note. Okay, she understood and she laughed. Okay, Bhavana हंसते हुए बोली. She laughed and said. Bhavana laughed and said, परियां होती हैं. Okay, there are fairies. दादी नहीं मेरी दादी ही वह अनोखी परी है. नो दैट यूनिक fairy is my grandmother. Okay, so no fairies has come from the other world. Only my grandmother is that unique fairy. Okay, yes. Now who is that Anoki Pari? Grandma, Dadi Ma. Okay, now who said this? Bhavana. Okay, so she understood that Anoki Pari is her grandmother. Okay children, yes, hope you understood this story very well.
kindly subscribe to our channel and give your valuable likes and comments. Thank you children. Dhanyavad.